Question है which of the following statement are correct? A material requisition note is used to record the issue of direct material to a specific job. A typical job cost will contain actual cost for material, labor and production overhead, and non-production overheads are often added as a percentage of total production cost. The job costing method can be applied in costing batches. First only, first and second only, first and third only, second and third only. तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. Information concerned A Limited single product as follows: selling price ₹6 per unit, variable cost production cost 1.20 per unit, variable selling cost 0.40 per unit, fixed production cost ₹4 per unit, fixed selling cost 0.80 per unit, budgeted production and the sales for the year ₹10,000 units. So what is the company's break even point? 8,000 unit, 8,333 units, 10,000 units, 10,909 units. तो 10,909 units आएगा कैलकुलेशन करने के बाद. नेक्स्ट है ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट इनडायरेक्ट मटीरियल्स, डायरेक्ट लेबर, शोर कीपर्स एंड नन ऑफ द अबव. तो डायरेक्ट लेबर नहीं आएगा, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम कॉस्ट कंप्राइजेज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट: डायरेक्ट मटीरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड, direct labor and factory overhead, direct material, direct labor and direct expense, none of the above. So direct material, direct labor and factory overhead. Next question है the term cost refers to an asset that has given benefit and is now expired. The price of products sold or services rendered. The value of sacrifice made to require goods or services. The present value of future benefit. तो आंसर है the value of sacrifice made to require goods or services. Next question है according to which of the following methods of material pricing are close to current economic values? LIFO, FIFO, HIFO, all of these. So LIFO. Standard costing is technique, methods, process या none of these. So technique. Storekeeper should initiate a purchase requisition when stock reaches minimum level, maximum level, reorder level या none of the above. So reorder level. The cost of dash is not included in the cost of production. Normal loss, abnormal loss, scrap, abnormal profit. तो यहाँ पे abnormal loss. नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट कॉस्ट क्लियरली बी डैश विद अ प्रोडक्ट. आइडेंटिफाइड, अपोर्शनड, एलोकेटेड या लोकेटेड. तो आइडेंटिफाइड. नेक्स्ट है डैश इज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच कॉस्ट इज एसर्टेन. कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, प्रॉफिट सेंटर, प्राइस सेंटर. तो कॉस्ट यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द मिनिमम स्टॉक लेवल इज 3,000 यूनिट्स एंड रीऑर्डर क्वांटिटी आर 2,000 यूनिट्स, व्हाट इज द एवरेज स्टॉक लेवल? 5,000, 4,000, 3,000, 6,000. तो आंसर है 4,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेज पेमेंट वेजेस ऑन टाइम आर नॉट गारंटीड?